Corona pandemic and lockdown, he delivered 350 plus webinar in 18 months, which is attended by 40,000 plus participants from 26 different countries and 30 plus cities in India on 55 different topics of various sectors of society. He has delivered more than 3,000 guest lectures in over 250 institutions in India and abroad on common skills, nanomaterials, design thinking, research methodology, NEP 2020, teaching as rewarding career, lifelong learning, goal setting, stress management, education technology, etc. for faculty and students. We are honored to have such a distinguished individual to join us today and will share his insight on need of skill development in modern education system. So without further ado, I would like to invite Dr. Nanuti to the podium to share his thoughts with us. Further dignitaries, please join the session. आपका ये कैमरा ऑनलाइन है ना, इसलिए क्या सेट है? नहीं, whether it will cover it or not, rather I am comfortable here also, कोई जरूरत नहीं। अच्छा, ओके, अच्छा ये this is to that cover. Hello. What point should I use this laptop or what? It doesn't have this thing. Slide changer नहीं है ना? तो the pointer has to be. So where from I will change the slide? That is what I. Okay, you I will have to ask. Okay, fine. And you can pick up. I don't need this. Fine. So very good afternoon to all of you. And at the outset, thank you so much, Dr. Hazare sir. And administration, management, Ragit sir, Bay sir, for inviting me here on this 2 days National NAAC workshop. The topic which is given to need of skill development. So need of skill development is something which has been saying people are talking about skills. And that too, if you are an engineering college, it is 80% skills we should talk about. But then we know the system. We know the system, how many theory class we take and how many practical class we take. So, next. Not only engineering, but अच्छा ये मेरे को दिख नहीं रहा है ना मेरे को. So not only engineering, but almost every field, whether it is commerce. अभी कावड़े सर से बात हो रही थी तो he is a commerce expert. And then कॉमर्स में भी स्किल्स की मस्ट है, आर्ट्स में भी स्किल्स की बहुत जरूरत है, परफॉर्मिंग आर्ट्स, ऑल अदर आर्ट्स, स्किल्स आर मस्ट, टेक्नीशियन स्किल्स आर मस्ट. तो इंजीनियरिंग में स्किल्स मस्ट है, ये बोलना यानी अभी इसको 50 साल पहले बोल लेना था, पर ये हमारी गलती नहीं थी क्योंकि हमको एक टिपिकल वो दे दिया था कि आपको
एकदम अप्लाइड सब्जेक्ट पढ़ाना है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ाना है, पाइथन पढ़ाना है, हीट इंजिन्स पढ़ाना है, स्टीम इंजिन्स पढ़ाना है, हीट ट्रांसफर पढ़ाना है, कुछ भी अच्छा पढ़ाना है, उसको कैसे पढ़ाना है? उसके ना 60 घंटे थ्योरी क्लास लेना है और उसमें से भी सब सब्जेक्ट को प्रैक्टिकल नहीं मिलेगा और उस प्रैक्टिकल के अंदर you will get 10 slots out of which 8 will be workable. Those slots will be of 2 hours and so 2 into 10 slots, 10 weeks, ऐसे 12 हफ्ते का होता है, but 12 weeks fine. So 12 into 2, 24 hours practical against 60, 40, 50, 70. M3, M4 teachers take 75 lectures because they see all question marks on their faces and they get disturbed. So हमको और classes होना, लो classes ही लो. The point is the overall structure of an engineering college or for that matter any university in the country is like major theory then practical. Major theory 50 घंटे 60 घंटे वो चीज पढ़ा रहे जो कि बिल्कुल अप्लाइड है, जो कि बिल्कुल इंडस्ट्री में जाके देखने वाली है, जो कि बिल्कुल इक्विपमेंट को हाथ पकड़ के देखने वाली है, उसको पढ़ाओ 60 घंटे 50 घंटे थ्योरी में एंड देन रिमेनिंग 20% 24 आवर्स देन मेनी सब्जेक्ट टीचर्स विल टेक मेरे तो 8 ही स्लॉट मिले, मेरे गुरुवार को तो हर गुरुवार को छुट्टी आती, तो ठीक है भाई, सो ही विल हैव 8 स्लॉट्स इन 16 आवर्स. आउट ऑफ दैट 16 आवर्स वी नो दी हाउ इट वर्क्स. लैब अटेंडेंट बैठा रहेगा, he will issue one by one and then journal चेक करेंगे, तो इफेक्टिव 1 घंटा. So 8 hours practical, 8 to 10 hours practical के अगेंस्ट 70 घंटे थ्योरी पढ़ाने के बाद skill development. I mean, it is such a big question mark on the complete education system, I tell you. And then अपना दोष नहीं है, next, it is not about next. So अपना दोष नहीं है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि काम ही वैसे था, पुराना जनरेशन था, स्टीम इंजिन मध्ये फर्स्ट रिवोल्यूशन, सेकंड रिवोल्यूशन, मास प्रोडक्शन, लेबर लग रहे, चलता है. 15 दिन का ट्रेनिंग दे दिया तो महिंद्रा में अगले 30 साल नौकरी कर सकता है. 2 महीने का ट्रेनिंग दे दिया तो जिंदगी भर सिविल इंजीनियर के साथ काम कर सकता. स्किल्ड लेबर. जमाना बदल गया. इट्स नॉट लाइक दैट. इट इज नॉट नाउ. आई मीन अर्लियर आल्सो इट वाज वेरी एसेंशियल, बट नाउ इट इज मैंडेटरी. Meaning first generation, second generation, third generation, fine. But now it is mandatory. If you are not working, then these engineers will work as, whatever, clerks with the title of software engineer, with the title of data management system, data scientist. क्या-क्या नाम रहते, काम clerically करते. I mean, no skilled thing is happening because he has not undergone any skilled training. So that is the culture of Indian education system. Third generation हो गया. Automation. Still people are not understanding. Even it is 100% automation, what kind of skills will supersede the entire engineering sector? Which skills will be superseding all other skills? You don't see, like third generation, I always give an example of a car. Mahindra & Mahindra हमारे सामने मैं बहुत बार जाता हूँ और उनके साथ बहुत प्रोजेक्ट भी कर रहे, काम भी कर रहे, उनके साथ ट्रेनिंग भी ले रहे. They had a complaint that last two terms earlier I had a meeting with their plant head and he said like हमारे पास बहुत सीनियर इंजीनियर्स हैं, कोई 30 साल पहले बीई हुआ है, कोई 25 साल पहले डिप्लोमा हुआ है, कोई 35 वर्षापूर्वी बीई बीटेक कहाँ से हुए, फाइन. And after that they undergo a very small kind of training, जो industry training चल रहे. If at all they get promoted, they will get good trainings, otherwise they may not. So sir, इनको ये जो भी problem आ रहे, we will blame it on service sector. We are not looking after any problem. Can you take a training? So we conducted training for those senior engineers also. So now the point is, इसकी skill development होगा कैसे? अब कार बनती थी, automation आ गया था. Third generation of industry, पहली दूसरी तो सबको third generation was like and then steering gets automatically, so it's a manless floor, right? So any good industry, Maruti and Hyundai and anything. But what is fourth even doesn't want robots to work.
Fourth generation doesn't ask for an automatic conveyor belt and going it in the fitting of the gears and automatic fitting of screws. Sorry, it doesn't get. It is BMW who started into automobile section which is just print command. It's an era of 3D printing. It's an era of 5G. It's an era of AI. It's an era of data science. It's an era of machine learning and deep learning. It's an era of cloud computing. It's an era of entirely revamping out of data storages. और जब सब कुछ बदल गया है, the fourth revolution talks about a print command, Control P, and an entire BMW car gets printed. So no need of precision and fitting of screws and getting things assembled and shaft alignment is to be done. Nothing. Everything is like exact. The way it is want, exactly the thing will get produced. 3D printers are there. So the huge things are getting printed. Then whose mind, whose precision? It is a software engineer who is taking care of all those things. And hence, fourth revolution. अब ये fourth revolution में हर चीज innovation हो रहा है. Every day, every single minute, world is coming out with new innovations, new discoveries, new inventions. Every minute. अब ये होने के बाद अगर इतना है, तो इसके बाद हमने हमारे बच्चों को क्या बनाना चाहिए? So the point is, next. It is expected that how we live, how we work, how we communicate, the way we value people, सारा सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, तभी एजुकेशन 4.0 को हम लोग रिसोर्सेज फॉलो करेंगे. Otherwise it cannot happen. The point is, entire system is changed. And then who is working in fourth revolution? Whatever we are providing. You and me, we are teachers in engineering colleges. We create human resources, and for those human resources, whatever we provide, will be working for fourth revolution. Next. So, थोड़ा फास्ट ही करना पड़ेगा. स्लाइड मेरे बहुत रहते हैं. So I just want to share more information. So first again education. For fourth revolution of industry 4.0, we did education 4.0, and then I remember. तो पहला तो generation when I was in school in 1980, I remember that lectures and memorization. Teacher will come, teach, and if you understand well, if you doesn't mug it up, and if you cannot mug it up, fail. रास्ता तय है. 10वीं का रिजल्ट 20-22% आता था हमारे जमाने में. मेरे वक्त 32% आया था 1984 में. तो 30-32% आने चकाचक, क्योंकि जरा पाठांतर नहीं तो मुलगा फेल. रट्टा मारने का. It is that simple. Lectures and memorization. I remember when I used to ask, हिम्मत ही नहीं थी क्लास स्कूल में. I was into number 1 school in नागपुर, पूरा स्कूलिंग सोमलवार रामदास पे, तो सबसे अच्छी वही थी तब. तो हाथ ऊपर करने की तो हिम्मत ही नहीं थी, पर कभी कर भी लिया कि सर वो केमिस्ट्री का सर वो मुख पाठ करायचा है, सकाळी उठ 4 वाजता पाठांतर. That was the only solution to anything which we haven't understood, and we used to क्वेश्चन आंसर गड़ 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 100 में 100, VRC जाओ नहीं तो GMC जाओ, दुनिया खत्म. ही था तो पैथेटिक. Zero understanding was acceptable as the most eligible candidate for any good course in the country. So that was gone. Sorry. Still there are, I can vouch for that Indian education, whether it is school or college, first generation में पढ़े वाले कम से कम 75% colleges आज भी पहला ही generation का. Because I go to many, I'm a NAAC assessor, but I go for NAAC से ज़्यादा मैं mock NAAC में बहुत जाता हूँ. Mock MBA, mock NAAC में बहुत घूमता हूँ. तो सब जगह जाता हूँ तो लोग जब when I ask teachers कि what are innovations you are doing, and they talk about PowerPoint है, कंप्यूटर है, क्लास में सर वो डिजिटल बोर्ड है. I said you are 30 years back of the system. And what is innovation? And आता थोड़ा education. I heard recently a vice chancellor talking education should be now knowledge based. I said this is 1982 dialogue of Sam Pitroda and Rajiv Gandhi on his dais. 1982 मध्ये म्हटलं होतं एज्युकेशन शुड बी नॉलेज बेस्ड, आणि यांना आता 2023 मध्ये नॉलेज बेस्ड. पीपल आर सो डिस्कनेक्ट. इट वाज अ सीनियर वाइस चांसलर, और नॉलेज बेस्ड एजुकेशन राहिलंच ना. वो किसने मना किया कि नहीं रहना चाहिए? बट दैट इज नॉट टू बी स्पेल्ड आउट नाउ. गॉन आर द डेज. नाउ व्हाट यू टॉक अबाउट इज एजुकेशन. फोर्थ रिवॉल्यूशन शुड से एजुकेशन शुड प्रोड्यूस इनोवेशन, एंड टू क्रिएट इनोवेशन यू नीड स्किल्स. To be innovator, you have to be a design thinker. You have to understand the importance of what is already all there. Let me have an entire grasp.
You teach me 5 chapters, I learn 5 chapters, and you assess me on those 5 chapters and I score 10 on 10, education has not grown. As simple as that. मैंने 5 चैप्टर पढ़ा दिए, आपने बच्चे ने 5 चैप्टर बहुत बेहतरीन पढ़ लिए, वो ब्लूम टेक्सोनॉमी, वो ऊपर तो छोड़ो, जो भी है अंडरस्टैंडिंग में पहुंच गए, एनालाइजिंग और आगे नहीं गए, फाइन। उसके बाद भी एजुकेशन का कुछ भला हुआ क्या? दुनिया का भला हुआ, इंडस्ट्री का भला हुआ? नहीं, क्योंकि वो 5 चैप्टर जो मैंने पढ़ाए थे वही 20 साल पहले मेरे को मेरे टीचर ने भी पढ़ाए थे, और वो 20 साल निकल गए, लाखों लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, IBM, गूगल, एप्पल, EY, कंपनीज बड़ी बड़ी बन गई, पर हम लोग क्या करते थे? Because we are unable to provide human resource for all those companies just because they are not, they are not giving any kind of innovative mindset into them. They are not design thinkers. They don't understand that if my teacher has taught me 5 chapters, what can be the 6th one? What can be the next generation out of it? Can I do something which nobody has done? And that is the point where you understand the importance of innovation. Next, what is innovation? So education should produce innovation. Is something learning by doing. Learning innovation आएगा कैसे? जब मैंने देखा ही बेसिक प्रोडक्ट ही नहीं देखा है, उसमें मैं कैसे इनोवेट कर सकता हूँ? और देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आ रहा तो इनोवेशन के माइंडसेट नहीं है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसा ऑब्जर्वेशन, you never know. I have seen thousands of examples. I rate research innovation in the country as number 1 scientist. Number 1 in country scientist कौन? ISRO, NASA, and DRDO, DRDL, Bhabha Atomic Center, Vikram Sarabhai Space Center. Outstanding research. They are even better and greater and much bigger than their counterparts in US and Russia. Yes, our ISRO is working better than NASA sometimes. Our defense services are creating some amazing missiles which even US doesn't have. Yes, salute to them. That is a core research. Fine. Who is second? And second, I give rating to kids. Kids are like maximum up to age of 20, not even graduates, and they have contributed to the world class innovation in this country. और फिर थर्ड लेवल पे आता है ग्रासरूट, जुगाड़ टेक्नॉलॉजी वाली, जो प्रचंड लोक आहे इंडियामध्ये ज्यांना कोणाचंच ऐकायचं नाही आहे, वो है 8वीं फेल, वो चमत्कार कर रहा है, खेत पे बैठ के, स्कूटर में बैठ के, मैकेनिक बन के, रोड साइड काम करके वो चमत्कार कर रहा है, वो इनोव्हेशन रजिस्टर नाही हो रहा, ये हमारा दुर्भाग्य है. आम्ही असे पेटेंट रजिस्टर करतो की जे आम्ही लिहिलेलं आम्हीच नाही वाचला, क्योंकि वो वकील ने लिखा रहता 35,000 रुपये देके. तो इतने 12 पण मेरे को बोला, अभी माझे 8 पेटेंट झाले, म्हणजे वाचलं का ते सांग बरं 5व्या पानावर काय लिहिलंय. म्हणजे वो वकील ने लिखा है और थोड़े 10,000 और दे दो तो और बन जाता, फ्लेक्सिबिलिटी भी निकाल देता, 20 दिवसात करून देतो, आणि पुन्हा जन्मात तो पेटेंट कोणीच पाहत नाही. पढ़ने यूज करना बहुत दूर है, देखता भी कोई. ये हमारी आदत बन गई ना, कोई भी चीज के एकेडमिक पेटेंट तो कितनी कागज बनाएंगे और किस कागज की कितनी वैल्यू है, ये भी तो समझ में आना चाहिए, और कहीं कॉन्शियस को भी तो पढ़ना चाहिए. ये थोड़ा मुद्दा लगे, लेकिन इनोवेशन कौन कर रहा है? एक छोटा सा एग्जाम्पल बता दो. एक वॉशिंग मशीन है, एक बच्चा है आयुष्मान नायक करके राजस्थान का, he was saying washing machine, and then we all use washing machines in our homes. We never thought of about that washing machine. What he gave up, sir, just an example of innovation. He said he saw a tap water and he took drainage pipe. तो उसका देखते रहता था, सीधी concentration, working with hand, physically seeing something. So he was like watching what is the difference between the inlet water and outlet water. हार्डली क्या, वो भी पानी है, ये भी पानी है. डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि ये जो ड्रेनेज वाला पाइप है, इसमें थोड़ा सा डस्ट है, कपड़े में लगा वाला डर्ट एंड सम सोप, दैट्स ऑल. रेस्ट वाटर इज सेम. सी दिस इज द कांसेप्ट. वो बच्चे को 8वीं वर्गात आयुष्मान नायक, बट इज नॉट कि इनलेट एंड आउटलेट वाटर सेम. पहले उसने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया दिल में. बोथ वाटर्स आर सेम, ओनली आउटलेट वाटर हैज सम डस्ट, डर्ट एंड सोप वाटर, दैट्स इट. if I can prepare a small non-electric simple filter, जो उसको 6वीं क्लास में पढ़ा दिया था उसके टीचर ने साइंस एग्जीबिशन के लिए, कि एक हे टाक, ते टाक, रेती टाक, ते ढंक टाक, ते गुल टाक, गुड़ुल, वो फिल्टर हो जाता है. ये 3 चीजें बहुत ही चिल्लर है. 1 tub of washing machine can wash 100 clothes now instead of 5 clothes which we wash right now. What a wastage of time. He posted it on National Innovation Foundation and got a Best Innovation Award, IGNIET Award at the hands of President of India. And that's why I say कि बच्चों में बहुत ज्ञान.
and we should not kill their dreams, their imagination, their innovation style. वो करना चाह रहे कुछ ना कुछ हाथ से, वो सोच रहे, वो कर रहे. उसने एक छोटा सा हाथ से फिल्टर बनाया है क्योंकि उसको 6वीं में बनाया था हाथ से बनाना, और उसने लगा लिया और पानी प्योर आ गया. ऊपर छोटा टुल्लू पंप 50 रुपये का पुनः वर गया. कितने बार सर्कुलेट कर लो, सेम पानी है, कोई पीना थोड़ी. पर ये हमारे दिमाग में आज तक नहीं आया. उसका पेटेंट हो गया और हमारा. ऐसे हजारों बच्चे इंडिया में. इंडिया हैज एन अमेजिंग ब्रेन्स एंड माइंड्स व्हिच, सॉरी टू से, जिसका अगर ये ब्रेन ये अगर बिजनेस तक नहीं पहुंच रहा, स्टार्टअप तक नहीं पहुंच रहा, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन तक नहीं पहुंच रहा, इंटरनेशनल पेटेंट तक नहीं पहुंचता, तो कहीं ना कहीं जवाबदार टीचर्स है. क्योंकि ये जो इतना चला, वाओ यूरेका मैम आई गॉट एन आइडिया, शट अप, कल होमवर्क नहीं किया था तू पिछले बार 2 बैक है, फालतू दिमाग मत लगा. ये जो बीच का हर्डल था उसको क्या क्या पढ़ने देगा. सो बट एजुकेशन नाउ शुड टॉक अबाउट इनोवेशन, प्लीज अंडरस्टैंड दैट. एंड नाउ अब 75 sessions I completed on NAB on only one concept. Of course, there are 4 chapters, 4 units: higher education, school, other focus area, and making it happen. Fine, but higher education is our favorite, and higher education may be what he says: recognizing, identifying, and fostering the unique capability of each student. Unique capability of each student, and developing how by sensitizing teachers and parents. कौन कर रहा है ये काम दिया है NEP ने? Who is doing that? Who is sensitizing? Who is giving a motivation towards that yes, you are doing something different and new. Please go ahead. हे म्हणायला कोणत्या टीचरला कोणता क्लास दिलेला आहे? Which class you motivate kids? What is that name of subject wherein you will inspire students like anything by telling some good stories? What is that subject called? Which laboratory gives him freedom to work whatever is the subject? Don't call that lab as physics or chemistry. Call it as a lab. And let students bring out some kids from physics to chemistry lab and from chemistry to chemical to civil मध्ये घेऊन जाऊ द्या. काय हरकत आहे? ये चलता ही नहीं हमारे. ये जब तक नहीं चलेगा स्किल डेवलपमेंट का कुछ नहीं हो सकता. ये जब तक नहीं चलता हैंड्स ऑन का अर्थ नहीं. ये जब तक नहीं चलता इनोवेशन हो नहीं सकता. और एजुकेशन को 4th रिवॉल्यूशन में ले जाने के लिए विदाउट इनोवेशन इट्स नॉट पॉसिबल. If it is not producing innovators, they are repeaters. They don't have any space in the next kind of employment, I tell you. In next 5 to 6 years, somebody result है तो पाइए. ये NEP बोल रहा है. अब मैंने जब किसी ने इतना अच्छा कैसे लिखा है, लाखों पालन से जब डेटाबेस आ गया था, तब से मैं उसको फॉलो करता था. एजुकेशन पे तो I was like thrilled कि क्या मजा है. And started delivering on NEP और अभी तक 75-80 दे डाले. I was so lucky कि क्या हो गया, हर IST no wherever he is an advisor, he said नहीं, कोई भी फैकल्टी डेवलपमेंट रहे उसमें NEP का लेक्चर होना ही चाहिए. और साथ में, और वैसे प्रेसिडेंट IST प्रताप देसाई और इधर कर्नल वेंकट एंड सम कंट्रीब्यूशन ऑफ माय फ्रेंड डॉक्टर हांडा, माय मेंटर. ये तीनों ने क्या कर दिया, रायसोनी में ही ये हो गया था सब कि अब के बाद कोई भी NEP रहे, कोई भी वर्कशॉप रहे, टीचर का 2 दिन का भी नहीं, उसमें एक लेक्चर NEP वर असलच पाहिजे. तो which facilitated me to like, और ये जो 3 टॉप लोग थे इनको मालूम था कि मैं बोलता हूँ इस पे, तो दे यूज्ड टू से कि चलो एक लेक्चर यानी त्रिपुरा में लेक्चर लिया मैंने, सिक्किम में लिया. सिक्किम में भी जब वर्कशॉप मिलता है NAAC और NBA और इसका, तो बोलते ठीक है NEP से नानो टीचर ठेवून गया. तो वो वाला जो लग गया, तो I was fortunate to talk on NEP for more than 75 times pan India. So point is कि इतना सुंदर डॉक्यूमेंट हम करने के वाले कुछ भी नहीं, डाइल्यूट होने वाला है धीरे धीरे. 3 बार हो रहा है. नेक्स्ट टू व्हाट वी थॉट, आई हैड सम फैकल्टी मीटिंग कि यार ये सब कैसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं. हैव यू एवर डन द अपर थिंग? आपको लग रहा है कि अपन तो क्लास का भी तो हमको ग्रिप नहीं रहता. वी टीच क्लास ऑफ 60 and we say कि this class is okay, this is brilliant, this is ठीक ठाक, इसमें 10 बच्चे ठीक है. We talk about group, 10 बच्चे, 15 बच्चे, ये कंप्यूटर साइंस वाले होशियार हैं, मैकेनिकल वाले कमी है. We talk about group. 4 लोग बैठे थे, कैसे हो सकता है? तो बोले बहुत आसान है, पूछ लो उनको. How it is possible? कैसे हो सकता है? पूछना पड़ेगा. Now this is a group of people sitting here and I want to know your skills, your knowledge,
युअर फेवरेट सब्जेक्ट. मेरे को ब्रांच वाईज नाही, मला ते माझ्याकडे लिहिलेलंच आहे. अभी यहाँ की लिस्ट मंगा लूं तो मेरे को सिविल ला कोण आहे, मेकॅनिकल ला, आई डोंट वांट दॅट. दॅट डझंट टेल एनी ऑफ युअर स्किल्स. तुम्ही काही लिहा, मेकॅनिकल मध्ये एमटेक पीएचडी लिहा, सिविल मध्ये लिहा, फिजिक्स मध्ये पीएचडी लिहा. दॅट डझंट मीन यू आर स्किल्ड इन फिजिक्स. सॉरी. मग काय, मग तुम्ही कशा स्किल्ड आहे फक्त तुम्हाला माहित है. अगर तुमने कुछ पढ़ाई करके तुमने अलग डोमेन में काम करना शुरू किया है, वो हो सकता है तुम्हारा यूजी का प्रोजेक्ट हो, पीजी का प्रोजेक्ट हो, पीएचडी प्रोजेक्ट हो, या तीनों व्यतिरिक्त कहीं ऐसे, व्हाटएवर, आई डोंट केयर. बट देन इतने लोगों का मैं कैसे फील ले सकता हूं अभी? द लिस्ट आई हैव, बट दैट लिस्ट डजंट टेल मी. सो व्हाट आई डू, आई विल आस्क एवरी वन ऑफ यू, सर सांगा, दिस इज व्हाट आई हैव टू डन. इसके अलावा क्या उपाय है? सो वी डिड सेम थिंग. जो बच्चा एडमिशन लेगा उसको सीधा गूगल फॉर्म भर के देना है. क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप, दिस इज सिंपल थिंग विच वी इंप्लीमेंटेड एंड डिड अ रिसर्च ऑन दिस. आज नहीं, 2019 में कर 18 में कर दिया था. व्हाट वी डिड, वी शुड आस्क स्टूडेंट्स टू फिल इन दिस फेवरेट सब्जेक्ट, फेवरेट टॉपिक, हॉबी, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, ड्रीम करियर एंड गोल्स. फर्स्ट ईयर में आए बराबर बच्चे को ये 3 चीजें लिखना पड़ता है. The moment they submit this Google form, you get a data into an Excel sheet, right? And you will be amazed to see. You can do this in your college. Very simple thing. बच्चों का motivation level 3 गुना बढ़ गया. Because somebody, college is asking me कि I am admitted to an aeronautical branch, but I am outstanding in Instagram influencing. बोलने तो मिला. And I am into engineering college civil branch, but I have decided to do political science and history for my IIS, and I am admitted to computer science or artificial intelligence, but I have already decided my career into armed forces, navy में जाना. ये बोलने का मौका हमने उनको दे दिया ना. आप थोड़ी नेवी पढ़ाने वाले हो, आप थोड़ी सीडीएस की प्रिपरेशन करोगे, आप आईएएस की प्रिपरेशन करना आपका काम ही नहीं है, पर उसको पूछना तो जरूरी था ना. हमने बोला कि नहीं, वी रिस्पेक्ट. होते 1800 बच्चों को डायरेक्ट बात करता था. गूगल शीट आ गया, पूरा डेटा आ गया, हॉबीज की लिस्ट आ गई, एक्स्ट्रा करिकुलर वेगळं काढलं, सैग्रीगेट कर डाला, फटाफट फिल्टर लगा एक्सेल में, सैग्रीगेट कर डाला. सैग्रीगेट करके यू विल नॉट बिलीव 85 स्टूडेंट्स ऑप्टेड फॉर आईएएस एंड आईपीएस ओनली. त्यांनी ठरवलं ड्रीम करियर मध्ये डिग्री होईल, पण तो पकड़ के कोर्स 30,000 वो क्यों करोगे उसको? वो नहीं कर रहा यार, उसको नहीं करना. क्यों डरा रहे उसको? उसमें बहुत गट्स है. हाउ मेनी आर एक्झिस्टिंग एंटरप्रेन्योर? या वर्षीचा डाटा माझ्या कॉलेजचा जस्ट पूछा कि कितने बच्चे एंटरप्रेन्योर है, अर्न एंड लर्न कितने बच्चे कर रहे. 80 मुलं निघाले. 80 मुलं स्वतःच्या फी पेक्षा जास्त कमवतात. उसकी साल में 1.25 लाख 1.5 लाख फी है, उसका इनकम साल का 3 से 5 लाख. क्या पढ़ा है उसको? कुछ तो भी पूरा 4 साल पढ़ाने के बाद उसकी औकात क्या है? तो 20-25 हजार की नौकरी. टीसीएस में जा, टेक महिंद्रा में जा, नहीं तो कोई कोर में जा, एल&टी स्विच गियर में जा. क्या दे रहा है? 50,000. और उसके लिए भी कटकट है, आसान नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड दैट इफ इट इज सो. ये बच्चों को तो छोड़ो यार, कम से कम याला आईएएस करायला देते ना. तर आम्ही काय केलं, ये बच्चे सेग्रीगेट हो गए, उन सबकी व्हाट्सएप ग्रुप बना डाले. व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, ऑल आईएएस व्हाट्सएप ग्रुप, ऑल आर्म फोर्सेस व्हाट्सएप ग्रुप, ऑल यूट्यूबर्स एंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स व्हाट्सएप ग्रुप, ऑल क्या जो भी है उनके सपने. रिस्पेक्ट देयर सपने, रिस्पेक्ट देयर गोल्स. If you cannot nurture, if you cannot guide, at least tell them yes, you can do it. I talk to them. I am in all groups. 40 ग्रुप मध्ये असतो मी स्टुडंटच्या, आणि सगळ्यांना सांगणार बढ़िया यार, गेट कैरी ऑन. एंड यू विल नॉट बिलीव, एक भी टीचर का काम नहीं पड़ा. सारे बच्चे आपस में पढ़ाई शुरू करें. सर मेरे दिल्ली में मामा है आईएएस ऑफिसर, उनका ऑनलाइन लेक्चर रखता हूँ, रखो. और वही 75 बच्चे अटेंड कर रहे हैं. उसी का मार्केट है. नहीं यहाँ बच्चे बोला कार्यक्रम को बैठाने को बच्चे नहीं. वहां 75 बच्चे आयएस वाले थे, ते 75 मुलांनी आपलं लेक्चर ठरवलं, ऑनलाइन केलं, झूम वर घेतलं आणि संपलं. मला कळले नाही, काम हो गया मेरा. एंड दिस इज वेयर आई अंडरस्टैंड सेंसिटाइजिंग द टीचर्स टू क्रिएट एन environment wherein students will feel freedom in learning. Students will feel like following their hobbies, their passions, their love, their favorite. वो कहाँ हो रहा है? और ये इतना आसान चीज है. अब इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट काम है क्या? एक फॉर्म व्हाट्सएप पर टाकला, पूरे भर के आ जाते.
वर क्या की सेग्रीगेट की व्हॉट्सअप ग्रुप केले की त्याच्यात एक एक टीचर नावाला टाकायचं आहे सुपरवायझर. बट द फर्स्ट थिंग आई वॉज हैप्पी 3-4 years बैक की जो वो बोला है वो वाला मैंने कर डाला. तो दैट इज द पॉइंट. एंड देन सेकंड ईयर में क्या कर लिया, ये तो बहुत कॉलेज करते होंगे, सेकंड ईयर में फिर से सेग्रीगेशन कर डाला ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड हायर एजुकेशन. मेनी ऑफ अस वी डू दिस. पुन्हा त्यांना सेग्रीगेट करून त्यांना लेबल करून व्हॉट्सअप ग्रुप क्रिएट करून टाकले. And then third and final year chiseling out there and explaining that how you can be the best among all 6,000 students in the college, or rather 1 lakh student in Nagpur University में तू सबसे अच्छा है, तू सबसे capable है, सबसे skilled है, सबसे competent है, सबसे intelligent है, सबसे smart है, prove it. And that was a competition given for them in the 4th year. And 4th year open talent event कर दिया. ये में जो भी है, you have to prove that you are best student of Nagpur University. And people came forward, and around 400 students felt yes they are best in the Nagpur University. और उसमें से 25 बच्चों को डायस पे पूरा ग्रिल किया उनके सब्जेक्ट के साथ और उनको बुलाया. वर्गात कुठलाही त्रास नाही आहे. They are doing their own thing. We have only said go ahead, good, better, good, follow your passion, follow your dream, follow your goal, we respect. You can do better. Is what we can tell. As it is सारे IAS ऑफिसर्स पे मैक्सिमम इंजीनियर्स और डॉक्टर्स ही करते हैं. आप कोई भी IAS के लिए देखो कुछ आर्ट एंड कॉमर्स वाले, पर सब्जेक्ट पालता आर्ट कॉमर्स के सब्जेक्ट. आज भी पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और फिलॉसॉफी और सायकोलॉजी हाईएस्ट है IAS में, पण हे सब्जेक्ट अभ्यास करून देणारे मुलं हाईएस्ट कोण आहे, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग. क्योंकि आपने उनको एक एक्यूमेंट बढ़ा दिया है, उनके एनालिटिकल माइंड ऊपर कर दिया है. दे आर अदरवाइज बेस्ट लॉट ऑफ द सिटी. is please create one thing. एक जगह कॉलेज में ऐसा हो जिसके नाम मैंने 12 सजेस्ट कर दिए, आप कुछ और 13वां नाम देना. एक जगह ऐसी होना चाहिए कॉलेज में wherein there will not be a label. फिजिक्स लैब, मैथ्स लैब, सिविल लैब, मैकेनिकल लैब, उसको इनोवेशन लैब बोलो, स्किल डेवलपमेंट लैब बोलो, उसको नॉलेज सेंटर बोलो, नॉलेज क्या हब बोलो, कुछ भी बोलो, नॉलेज लैब बोलो, इतने नाव दिले नहीं. याच्या व्यतिरिक्त ओपन लाइब्रेरीज बोलो, कैफे बोलो, कुछ भी बोलो. नॉलेज कैफे भी क्रिएट करके देख लिया मैंने कुछ दिन के. ये कुछ भी करो, लेकिन एक जगह ऐसी होना चाहिए wherein students can come and learn anything. Student can do anything. Student can take equipment from here and there and then they can stay there for 2-3 days till they finish it up. If this is the fundamental first step. देखो किसी को आप स्किल कर ही नहीं सकते. जब मैकेनिकल का बच्चा आईएएस ऑफिसर बनने का सपना लेके आ गया, त्याला पाठवा ते टूल रूम मध्ये पाठवा औरंगाबादच्या. वो करेगा क्या धूप में खड़े रह के ऐसे पागल? वो करेगा ही नहीं. त्याला महिंद्राचं ते एवढं हायफाय ट्रेनिंग आहे, आपलं केईसी इंटरनॅशनल क्या जबरदस्त ट्रेनिंग दे रहा है, अरे त्याला नाही, त्याला मैकेनिकल इंजीनियर नहीं व्हायचं है. अब किस बात का स्किलिंग करोगे? तो सबसे पहले पॉइंट है कि डू यू हैव एन एनवायरनमेंट इनटू दिस करंट एजुकेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग स्किल्स. स्किलिंग में रिगरस मेहनत है. पेटी वाजवायला शिकणं स्किलिंग है, बैडमिंटन स्किलिंग है, जाओ करो. नहीं होता जब तक उसको दिल से पसंद नहीं है. रोज चाट मारेंगे बैडमिंटन को, पेटीच्या क्लासला, तबल्याच्या क्लासला, स्किल है, ये नहीं होता. अब ये जो इतने एंटरटेनिंग स्किल्स तो उसको मजा नहीं आता. तो वो जो इतना एंटरटेनमेंट से भरा, इतना अट्रैक्टिव फील्ड का जो स्किलिंग है, उसको साइना नेहवाल दिख रही, उसको सानिया मिर्जा दिख रही, उसको करियर दिख रहा, ग्लैमर दिख रहा, शेफ बनना है, वो नहीं बन रहा क्योंकि उसको नहीं पसंद. तो स्किलिंग के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है आइडेंटिफाई their own passion, their love, their choices, and for that to understand, make them understand what their choices are, is a culture to be developed. How many times you have asked what's your favorite subject? Once you have taught 4 units, ask which unit was your favorite. You have learned 4 units. What was your favorite? What do you find most interesting into this my 1 hour lecture in last 60 minutes? You are not given a chance, and you are cutting down to even talking about their choices. The moment choices की बात नहीं हो रही ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता. वो पॉइंट है. और एकदा ते झालं, उसको जब खुश हो गया कि मेरे मन का होता है, तो फिर आपको देने की जरूरत नहीं है, वो कर लेता है. उसको सिर्फ मोटिवेशन ही मिसिंग है. तो ये नाम कुछ भी लीजिए, लेकिन इट शुड डिसॉल्व द बाउंड्रीज ऑफ सब्जेक्ट, ब्रांच, ईयर, कोटा काय. फाइनल ईयर एरोनॉटिकल का बच्चा मेरे अभी आया ना, एरोनॉटिकल मेरे यहाँ जो 4 ब्रांच है, एरो, बायोटेक, केमिकल, ये 3-4 ब्रांच में जो बच्चा सपना लेके आता है,
बॉम्बे दिल्लीचे मुलं आहेत, कारण त्यांना माहिती आहे एरोनॉटिकल का, ठीक, इतना सपना है. सेकंड ईयर में उसका पूरे सपने बदल गए. उसने बोल दिया कि मला लिटरेचरच काम करायचं. 8 पॉइंटर 9 पॉइंटर तो मिलता है सबको अपने यहाँ, तो कुछ की कोई ताकत नहीं लगती, तो वो हो गया. What he did, he wrote 2 novels which are bestseller on Amazon and Flipkart. लव स्टोरी फिक्शन लिख रहा है और सुपर हिट नॉवेल्स है. और अभी उसने तय कर लिया, एंट्रन्स एकदा फायनल आहे मुलगा तो, एंट्रन्स दिली MA क्रिस कॉलेज बँगलोर, सगळ्यात टॉप कॉलेज आहे, तिथे ऍडमिशन घेणार MA. बी एरोनॉटिकल के बाद MA इंग्लिश कर रहा है, क्योंकि 2 नॉवेल बेस्टसेलर हो गए ना, और 2 लिख डालेंगे तो चेतन भगत बनता, उसकी भी तो 5-6 है ना, अमीश त्रिपाठी बन जाएगा. यू नेवर नो. आई मीन ग्लैमरस करियर है, करोड़ों रुपए का करियर है तिथे, क्या एरोनॉटिकल बनेगा. ठीक, उसका मैंने सत्कार किया, उसको मेरे हाथ से मेरे के फोटो निकाला, इकडे तिकडे फिरवलं, लोकांना सांगितलं, गदगद हो गया कि मेरे को नहीं होना एरोनॉटिकल इंजीनियर. क्या करना है, हर साल मेरे 60 बच्चे पास हो रहे, क्या करूं उसका. पर ऐसा ऑथर निर्माण हो गया तो जिंदगी भर नाम लेगा, कॉलेज का नाम होगा, उसका नाम होगा, और बताएगा कि नहीं यार 2 बैक होते पण सर म्हणे नॉवेल लिख, काही होत नाही, तो मेरा भी नाम लेगा आगे पीछे. तो पॉइंट ये है कि ऐसे बच्चों को जब तक हम आगे नहीं बढ़ाते, उसके स्किल्स, उसकी फेवरेट, उसका चॉइस, एंड प्लीज गिव चांसेस ऑफ स्पेलिंग आउट चॉइसेस इनटू देयर क्लासरूम्स. इफ यू आर नॉट गिविंग दिस, इसको 1 मिनट लगता है, और ये एजेंडा तय करना होगा. द मोमेंट यू गेट इनटू दैट एजेंडा, नेक्स्ट, बहुत सिंपल है. अभी जो मैं बात कर रहा था ना, अभी क्या हो गया, लास्ट आई डिड लाइक यू नो व्हाट डॉक्टरेट इन 1994 मध्ये पीएचडी होऊन गेलं. अब उसके बाद थैंक्स टू डॉक्टर मोडक सर, जो मेरे केबिन शेयर करते थे, हम 7 साल मोडक सर और मेरी केबिन, आप लोग जो भी सब कॉलेज आए हुए, तो मोडक सरांच्या बाजूची केबिन. आई वाज सो फॉर्च्युनेट एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड की मेरे को वो वाली केबिन दे दिया. भले छोटी थी, पण मोडक सरांनी आमची आजूबाजूला केबिन, आणि त्या केबिन मध्ये बसल्याचा फायदा असा होता कि उन्होंने 10-12 रोज टिफिन खाने का, 8 साल मोडक सर के साथ टिफिन खाने का सौभाग्य है. तो रोज तुमचं पीएचडी होऊन नंतर 4 वर्ष झाले, तुम्ही गाईड नाही झाले, तुम्ही फक्त गाईड बना, गाईड मी करी, त्या तक ऑफर दी, तो मला नाही सर ते तर जमणारच नाही, म्हणजे हर चीज था कि तुम्ही बना. एक दिन याने 96 97 हां 98 में फाइनली एक दिवस आले, त्यांच्यासोबत त्यांचा एक पीएचडी स्टुडंट, सह्या करायला वेळ आहे का नाम तुम्हाला. मला का बरं, तुमचे फॉर्म पाठवतो तिकडे 7 कॉपीज, मी बनवलाय, CV घेतला म्हणे रजिस्टर कडून, तुमचे कागद घेतले, डॉक्युमेंट लावले. I was so fortunate कि प्रोफेसर मोडक collected my documents, created a file, फक्त सही करता का मैं, सॉरी, then I signed it and you will not believe, 4 महीन्यात वाराणसी हो गया. वो जमाने में कुछ था ही नहीं, and I had 10 seats, I got 10 students on very next day. 10 लेते थे तब, 10 स्टूडेंट लेते थे, प्रोफेसर वगैरह का फंडा नहीं था. I was assistant professor, but I could take 10 students. And the moment I got a letter in 2000, and त्याच दिवशी माझ्याकडे 10 स्टूडेंट पीएचडी मिल गए, चालू हो गया काम. And then I realized, come on, अब मेरे को दिखता मेरा SCI अच्छा 400-500 तो भी हो गया. अब मेरे को समझ में आ रहा है कि गूगल स्कॉलर पे मेरा साइटेशन कैसा कम, बहुत कुछ भी दिख रहा, कैसे स्कॉलर पे कम दिख रहा है, कैसा मेरे को मतलब वो सारे कॉन्सेप्ट पे पीएचडी स्टूडेंट के कारण आया, नहीं तो पीछे रह गया. 11, 12, 13, 14 स्टूडेंट हो गए. 2015 I decided कि ये सब बेकार है, अभी enough of this, it's all repetition. Even if I had 25 PhD students at my retirement time, so what? और 12 हैं, 13 है तो क्या कर लूंगा. उनके बहुत अच्छे हो गए, they are all associate professor, प्रिंसिपल भी बन गए मेरे स्टूडेंट, बहुत अच्छा करियर बन गया उनका. पर मेरे को क्या करना है, बहुत हो गया अभी. So I stopped. नागपुर यूनिवर्सिटी से भी मेरा नाम नहीं दिखेगा, गाइड करके बोले ये सब दुकान बंद. And I started whatever I love, I will do that. मेरे को जो मजा आ रहा है, नया पढ़ूंगा, पहले पढ़ूंगा फिर पढ़ाऊंगा. And this I decided in 2015, and I started working on social innovation and social entrepreneurship. And it is an amazing field. It's most in thing in country like India. तो अपने देश को क्या जरूरत है, अपने माहौल की क्या जरूरत है, किस चीज पे अपने को इमीडिएट लोगों का अटेंशन मिल जाएगा, किस चीज पे इमीडिएट प्रोजेक्ट मिल जाएगा, किस चीज पे मेरे को पैसा आ जाएगा बहुत सारा, ये सारा देखा तो फिर ऐसे फील्ड चुनना चालू करा. And fine, I mean that was my choice. But then when I'm like currently on around 10 European universities का syllabus framing committee पे हूँ मैं. So I frame syllabus for
टेक्निश यूनिवर्सिटी बर्लिन, आई एम सिलेबस डूइंग फॉर स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी, उनके बोर्ड की मीटिंग में जाता हूँ, आई एम ऑन देयर बोर्ड, सिलेबस फ्रेमिंग की मीटिंग्स होती है, फिजिकली आई कुड ट्रैवल टू सो मेनी कंट्रीज जस्ट बिकॉज आई वाज ऑन देयर बोर्ड। एंड देन पॉइंट इज कि वो करने के बाद जब समझा, पहली बार जब मेरे को सिलेबस फ्रेम करने मिला, नागपुर यूनिवर्सिटी में तो अपन ने हजारों आज तक वो मीटिंग किए, एंड देन द इंस्ट्रक्शंस वेयर सर दैट इज इंटरेस्टिंग, एंड देयर माय आई गॉट ओपन कि अच्छा अस्वस्थ व्हाट दे सेड, आई गॉट सब पहला सब्जेक्ट मैंने किया था, आई थिंक वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह कुछ था, सो वेस्ट मैनेजमेंट वाज द सब्जेक्ट व्हिच वाज गिवन टू मी टू क्रिएट अ सिलेबस, एंड दे वर यू शुड टू क्रिएट 120 आवर्स कोर्स with so and so ECTS and so Indian credit system, सब सेटल था, 120 घंटे का बनाना था मेरे को सिलेबस, एंड आउट ऑफ दैट 120 यू कैन हैव 15 to 18 even theory classes, that was a condition कि 15 से 18 तास 120 घंटे में से अगर जरूरत है तो, क्योंकि तो अप्लाइड फील्ड है, वेस्ट मैनेजमेंट करता तो रोज नागनाले और जोन बसायचं, ट्रेनिंग लेना है वहां बैठ के, टेस्टिंग करना है, सैंपल लेना है, गांव जाना है, नीरी जाना है, वापस आना है, फिर घूमना है, फिर दूसरे रास्ते में जाना है, लैब पर क्लासरूम तो पूरे काम है, क्लासरूम के तो वीडियो भेज दूंगा मैं, शाम को पढ़ लेना आराम से। तो 120 घंटे का जब सिलेबस बन रहा है तो उसमें 15 से 18 थियरी क्लास यू मे हैव, और अब जब दिमाग खुला की 100 तासाचा सिलेबस बनवायचा आहे, याच्यात क्लासरूम नाही, and this is a routine throughout European university, and that's why the reason how many Nobel laureates we have and how many Nobel laureates these universities have. कल्चरच नाही आहे ना, 100 तास जेव्हा मला लिहायला लागलं ना, कमिटी बनाना पडा कॉलेज आके, मला तो कुछ किया नहीं, कॉलेज में अनेक केमिकलचे लोक घेतले, बायोटेक्नॉलॉजी लोक घेतले, वेस्ट मॅनेजमेंटचे एक्सपर्ट घेतले, LIDच्या लोकांचं बोलूया 100 घंटे बिना थियरीचे शिकवायचं आहे, फिर पता चला चलो ये करेंगे वो करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट, सो देन आई थॉट व्हाट शुड आई डू, and these were the options I thought of, and then this started evolving into all those what we understand as actual learning on that, experiential learning क्या होता है ये तब समझा, और 100 घंटे, और ऐसे अभी हमारे कम से कम मेरे 8 सब्जेक्ट जो हमने डिजाइन किए ऑलरेडी यूरोपियन यूनिवर्सिटीज में स्टार्ट हो गए, उसको मैंने इंडियन क्रेडिट मध्ये करून आपल्या अनायसे नागपुर यूनिवर्सिटी ओपन इलेक्टिव डाला है, तो सारे सब्जेक्ट हमने हमारे ओपन इलेक्टिव पेज पे भी डाल दिए, but those are the subjects. So point is, जब तक हम 100 घंटे की ताकत नहीं रख रहे जो बियॉन्ड क्लासरूम पढ़ना है, तब स्किलिंग होगा ना, स्किलिंग कब होगा, जब 10 तासात लेबॉरेटरी मध्ये असं लाईनीत उभं राहायचं, एका टेबलवर 12 पोट्टे काम करावे, दूर टीचर दूर हात नाही लावायचा, तो बच्चे खड़े बेचारे गरीब समान, हे 50 लाखाचा है तो क्या करूं, उसको होना ही नहीं, पचा उसने बोला 50 लाख का खरीदो, आप उसको हाथ ही लगा दे रहे, हाथ लगाया भी तो 1 घंटा हफ्ते में, फिर अगले गुरुवार छुट्टी आ गई, फिर अगले गुरुवार उसने चाट मारी, तो पता चला महीने में एक ही बार दर्शन हुआ लेबॉरेटरी का, क्या स्किल डेवलप, क्या हैंड्स ऑन होगा, क्या एक्सपीरियंशियल लर्निंग हम देना चाह रहे हैं और मिलेगा भी क्या, और ऐसे होते होते डिग्री हो जाए, हो गया, जिंदगी खत्म, क्योंकि उसके बाद तो ऑफिस तो ऐसे फुकट में किसी को रख के ट्रेनिंग देके स्किलिंग करके तुमको देने नहीं वाला, इट विल नेवर हैपन, आई टेल यू, it will happen, it can happen, it has to happen only in this UG program 4 years, अगर वहां नहीं हो रहा है तो जिंदगी खराब है, वही तो दिन थे यार, वही करना था ना, इथे तो ठरलं ना मी सिव्हिल इंजिनियर आहे की मेकॅनिकल आहे, मग तिथे का नाही दिला, वहां we could not supply, and then these many ways, team assignment, project based, consultation, research, case studies, I mean there, and these are like, there are another 100 types of pedagogies and training and teaching methodologies which we can provide next, तो ये मेरे को करना था, तो ये हो ही नहीं रहा, and all big companies like Google, Apple, Penguin, Random, Ernst & Young, UK, IBM, जितने बड़ी brands हैं, they are all talking about skills over degree. Second year back चलता, third year back चलता, skill knowledge. They are taking an interview, and if you are done with interview, they are not at all bothered of what. In fact, they find that if you are an innovator, if you are a design thinker, if you can think beyond out of box, if you can think on something which you have not thought, if you can think something about improvement of the current product, current system, current method, current procedure, current methodology, if you are a kind of a person, you are an innovator, they are ready to offer you 60% additional package into the existing package for the post which you have been selected. It's something so magical. अब ये सब चीजों से हम बच्चों को डिप्राइव कर रहे हैं, क्योंकि हमने उसको सिखाया नहीं कि रिसर्च कैसे करते हैं,
क्योंकि हमने उसको सिखाया नहीं कि स्किल डेवलपमेंट क्या होता है, हमने उसको सिखाया नहीं कि हाथ से करना क्या होता है. वी हैव नेवर टॉट देम. सो ये सब अगर करना पड़ेगा, जब सारे टॉप ब्रांड इंडिया में भी अभी नहीं हो रहा कहीं, ऑल बिग शॉट्स ऑफ मेनी टॉप इंस्टीट्यूशंस लाइक टीसीएस एंड वो कुछ नहीं है, प्लेन ग्रेजुएट है कहीं वीआरसी के, कुछ जमाने के गवर्नमेंट पुणे के आईआईटी के प्लेन ग्रेजुएट है, कभी एमटेक भी नहीं किया उन्होंने, ना एमबीए करने की सोचा है. दे आर लीडर्स, कर रहे चमत्कार. वो क्या डिग्री को इंपॉर्टेंस देंगे? दे आर नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस. इट इज शिफ्टिंग फोकस फ्रॉम डिग्रीज. सो वी शुड सी, वी आर अ डिग्री प्रोवाइडर इंस्टीट्यूशन, यू एंड मी. नेक्स्ट, सो वी कैन नॉट से कि डिग्री बेकार है. डिग्री दाल चावल है. दाल चावल खाने के बाद कोई नाम भी नहीं लेता आज चावल खाया, अभी बता था. वी टॉक अबाउट डेजर्ट्स एंड वी टॉक अबाउट स्टार्टर्स. हाँ, ये पनीर टिक्का अच्छा था, सूप में 3 कैटेगरी थी, मॉकटेल्स में 5 थे, डेजर्ट में रसमलाई आइसक्रीम विद 6 सॉसेस था. पीपल टॉक अबाउट आइसिंग ऑन द केक्स, दे डोंट टॉक अबाउट दाल चावल. डिग्री है ना, डिग्री इज दाल चावल. बन जाएगा 30-40 हजार रुपए का सो कॉल्ड जो भी बनना है, इंजीनियर डॉक्टर क्या बनना है, तो मतलब ही नहीं उसका, क्योंकि देयर इज नो ग्रोथ प्लान एंड देयर कैन नॉट बी एनी ग्रोथ माइंडसेट इनटू दैट टीचर, इनटू दैट स्टूडेंट. पब्लिक ग्रो नहीं हो रही. इंडिया में सबसे बड़ा बीमारी है ग्रोथ माइंडसेट गायब है. किसी को पूछ लो आज से 5 साल बाद क्या बनने वाला है, वो दूसरे पे डाल देते, कॉलेज मेरा बंद हो जाए, मेरे इंजीनियरिंग कोर्स में आजकल मौका नहीं रहना. तेरे को पूछ रहा हूँ भैया, कॉलेज बंद हो जाएगा तो तू भीख मांगेगा घर से, क्या करेगा, घर में बैठेगा? नो, इट्स नॉट योर, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी यार. यू आर नॉट डिपेंड. डिग्री मैंने कॉलेज में काम करने के लिए थोड़ी किया था. डिग्री मैंने ये नौकरी नहीं मिली तो घर में बैठने के लिए नहीं किया था मैंने डिग्री. मेरे को क्या बनना है ये नहीं, अपन सब पे डालेंगे. आता दिन खराब आ गए, तेरे थोड़ी आए. You are making your days bad. You are responsible for whatever you are. It is not that there are people who are earning crores of rupees. You are not. You don't want to. Rather, I should say you don't want to, and that's why you are not doing that. Please understand that. Top 10 skills. Let it be. I mean, these are the skills. Can you list out of these 10? ये तो बहुत ऐसे 50 है, पर ये स्किल सेट में मैं भी ट्रेनिंग देता हूँ एक्चुअली, इंडस्ट्री 4.0 की ट्रेनिंग से. तो इसमें जब मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो आधे लोगों को तो ये नहीं मालूम कि ये सीखना कैसे पड़ता. ये तो होता है बोलते, होता है. एक आध आदमी क्रिएटिव होता है, एक आध आदमी क्रिएटिव नहीं होता. बोले क्रिएटिव वाले आर्किटेक्ट बनते, डिजाइनर पेंटर बनते बोले, और बिना क्रिएटिव वाले इंजीनियर बनते. आई डोंट अंडरस्टैंड. अरे काय म्हणजे किस बात की डेफिनेशन है मेरे को? क्रिटिकल थिंकिंग का क्या रहता, क्या नहीं मालूम. गूगल करेंगे क्रिटिकल थिंकिंग. आई मीन दिस आर द फंडामेंटल स्किल्स व्हिच पीपल मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेटिंग विद अदर्स, इमोशनल. I mean, these are the skills which I teach. I take trainings on that. But the point is, critical thinking and creativity. I mean, 9 दिवसाचा कोर्स केला टेक्निकल युनिव्हर्सिटी बर्लिन जाके फिजिकली. कहाँ पे किया? आर्किटेक्चर कॉलेज में. I did a course there. आर्किटेक्चर कॉलेज में it was a full-fledged course of 9 days. सर्टिफिकेट कोर्स केला. काय शिकवलं फक्त? क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग. और जो उसमें से मेरे को बेस्ट टीचर लगा ना, हम गदगद थे उससे पहचान बनाने की सोचे थे, तो निकाला सेकंड ईयर का स्टूडेंट. So sorry. I am a second year student. My guide told me to take up a class, so I am doing that. तो जो बेस्ट टीचर ना हमारे लिए, कि जो उनको ले लेके घूमता था पूरा कैंपस, 7 मंजिली आर्किटेक्चर कॉलेज था, आउटस्टैंडिंग कॉलेज. एवरी सिंगल नूक एंड कॉर्नर ऑफ दैट कॉलेज वाज अ लर्निंग एक्सपीरियंस. और वहां का जो बेस्ट टीचर लगा, जो हमको ले लेके घूमता था पूरा 7 मंजिली घुमाता था ट्रेनिंग लेते, तो वो था सेकंड ईयर का बच्चा. क्या पढ़ाया उसने, जिंदगी फंडे क्लियर हो गए क्रिएटिविटी के. तो वो चीज है. तो ये स्किल्स मेरे को पढ़ाने को समय कहाँ है? Either you create an extra environment, either you create extra time, extra space, extra things. Otherwise, you are not doing that. Next, ये नाम ही पढ़ के मेरे को समझ में नहीं आ रहा. These are another important skills. These skills are also outstandingly required. हमको मालूम ही नहीं है, क्योंकि इसके लिए कोई क्लास नहीं, कोई समय नहीं. पर मैं यही बोल रहा हूँ कि इसके लिए अगर कोई इनोवेशन लैब बन जाए, इसके लिए कोई सेल्फ लर्निंग बनाओ ना. आप मत पढ़ाओ, पर आप पढ़ो. ये बोलने के लिए कोई जगह, समय, यहाँ के 5 नॉन स्टॉप थियरी क्लास, थियरी प्रैक्टिकल थियरी ब्रेक, हाँ आदमी करेंगे. अभी मैं यहाँ गया था. नेक्स्ट, अभी मैं एक NAAC का इसके लिए गया था. बहुत अमेजिंग. अजिंक्य यूनिवर्सिटी गया था, अजिंक्य पुणे में. तो अजिंक्य यूनिवर्सिटी में वहां देखा, सर टाइम टेबल देखा उनका. उनको गरज नहीं है, उनके पास 7 लाख रुपए फी है और 25 लाख डोनेशन है, और सब बच्चे BMW और Audi से आते हैं वहां पे. तो उनको गरज ही नहीं है भोगना NAAC के A+ ए का, उनको मतलब ही नहीं. They don't care. Like no IIT cares for MBA. They don't allow into their campus MBA NAAC people into their campus. They are quality much ahead of what they can think even. So that's not a point. NIT को भी जबरदस्ती किया इसलिए बेचारे कर रहे हैं.
दौड़ रहे हमारे भी एनआईटी का तो 8 कमिटी 8 ब्रांचिंग कमिटी है, कोई जरूरत नहीं यार, यू हैव अनदर क्वालिटी पैरामीटर्स व्हिच यू कैन डिसाइड एंड टॉक एंड कॉम्पीट इंटरनेशनल, बट फाइन. तर अजिंक्य में फिर भी बोले की ते युनिव्हर्सिटी कंपल्सरी केली, स्टेटस वाल्यांना नॅक करावं लागतं रे. इतना सही टाइम टेबल, 1 घंटा जैसे उनका सब्जेक्ट लिखा था कोई भी कैसा फिजिक्स, उसके बाद उसी टाइम टेबल में 2 घंटा फिजिक्स एब्सॉर्प्शन टाइम स्लॉट. म्हणजे मैंने आज 1 घंटा पढ़ा है, वो तुम्हें फर्स्ट जनरेशन के पढ़ाता हूँ, लेक्चर एंड मेमोराइजेशन गड़गड़ यूं नीचे दी, भले पावर पॉइंट पे दूंगा, डिजिटल पे स्क्रीन पे दूंगा, जो भी दूंगा, पर मैं ही बड़बड़ करूंगा, आप लोग सुनोगे, तो वो वाला हो गया. उसके बाद बच्चों को 2 घंटे का एब्सॉर्प्शन, आउटस्टैंडिंग मेरे को लगा. मैंने ये क्या करते हैं, तो बोले ये बच्चे बियॉन्ड क्लासरूम, विद इन क्लासरूम, आउटसाइड, लॉन्स, कैंटीन, टपरी, कॉरिडॉर्स, अशा सगळीकडे बसायची जागा निर्माण केली. इतना ब्यूटीफुल कैंपस है ना, मैं फोटो निकाल के लाया, मैंने सर को बताया आपको बनाना है, हमने अभी चालू कर दिया. मतलब जितने जागा है ना तिथे बेंचेस, थोड़ा सा डेस्क टाइप का और एक पावर प्लग लगाओ ताकि लैपटॉप उसका चलता रहे, मोबाइल उसका डिस्चार्ज ना हो. अशी त्यांनी जिकडे तिकडे हर फ्लोर पे जितनी कॉरिडॉर्स है ना वहां गद्दे डाल दिए आणि तिथे प्लग पॉइंट लावले, पूरा मांडी घालून बसले, लैपटॉप लेके बैठे काम करते. क्योंकि हर एक घंटे के क्लासरूम के पीछे उसको 2 घंटा एब्सॉर्ब करना है व्हाट ही हैज लर्न from surfing, from YouTubing, from Googling, from library, from books, from talking to peers, from talking to teachers, from talking to industry people. He has to absorb that content which has been taught for 1 hour. इसको बोलते हैं एजुकेशन. बोला यार जबरदस्त है. आणि त्यांना 2.38 देऊन आलो मी, क्योंकि बैठते ही नहीं ना वो लोग, ये करते ही नहीं काम कुछ भी. तो पॉइंट ये है, दे डोंट केयर इवन, आई मीन दे आर फार अवे फ्रॉम दैट. क्या काम है, क्या जबरदस्त काम. उनके फिल्म्स वाले डिवीजन में गया था, फिल्म के जो डिप्लोमा डिग्री है वहां पे नसीरुद्दीन शाह पढ़ाती, वहां श्रीदेवी पढ़ाती थी, वहां पे पूरे सुभाष डे की जो टॉप इंस्टीट्यूट 20 साल से चल रही है विस्लिंग वुड्स, उसकी डायरेक्टर वहां डायरेक्टर. अब ये सब पढ़ने के बाद क्या डायरेक्ट स्किलिंग हो रहा है. जावेद अख्तर और स्मिता पाटिल और राज बब्बर पढ़ा रहे जहां पे, वहां स्किलिंग मूवी सिखाने के बाद एग्जाम लेके त्याचे मैप करेगा कोर्स आउटकम, कहां करेगा, इट्स नॉट पॉसिबल. तो 8-8 घंटे बैठे हुए हैं. तो यू विल नॉट डिजाइन स्कूल. तो इतना अमेजिंग है सर, कळलंच नाही. 15-20 लोकांची जमिनीवर बसली होती, इसमें का टीचर कौन सा स्टूडेंट कौन सा. एक शॉर्ट्स वाला लंबी छुट्टी वाला था, वो एचओडी था निकला फिर. आई मीन दे आर सो कैजुअल. स्लीपर काढून ठेवली होती बाजूला, मांडी घालून बसला था, चालू था. कि मेरे को जब डायरेक्टर आया, वाइस चांसलर, सॉरी डायरेक्ट वाइस चांसलर के साथ राउंड ले रहा था, वाइस चांसलर ही इज एचओडी, उसने गिरा भी नहीं. ठीक है, उसने कुछ नहीं, खड़ा नहीं हुआ, बैठा नहीं, किसी ने कुछ बोला नहीं, अपने काम में लगा हुआ था. एक लैपटॉप की बड़ी ड्राइंग शीट लेके बैठा, कुछ कार डिजाइन कर रहा था. सो व्हाट ही इज डूइंग हिज ड्यूटी. सो आई मीन यू नो द वर्ल्ड इज डिफरेंट. दे बिलीव बिजनेस एंड वी बिलीव व्हाटएवर इज नॉट बिजनेस. एनीथिंग एंड एवरीथिंग agile, you know agile, what is agile? You have to change continuously and work upon the system wherein which will you can, if you are an administrator, next ask you फटाफट. जैसे मैंने 2.5 घंटे चालू किया. What is agile? It's collaboration, teamwork, continuous learning, respond to change. I mean something has new has come, accept it first. नया चीज आई, एक्सेप्ट करो. एक्सेप्ट करोगे, इंप्लीमेंटेशन प्लान बनाओ और तुरंत इंप्लीमेंट करो. And that is what we understand by agile. Everything has to be agile. Agile technologies, agile building, agile ecosystem, agile hierarchies. ये नहीं होता कि मेरे अंडर का यूजर है, मेरे से 5 नीचे पोस्ट है, उसको भी काम आता हो तो उसको दे दूंगा डायरेक्ट. So agile. So that is the culture wherein people can think on the skilling. Next. Yes, you can read next. I talk about this next. मेरे को 1-2 पॉइंट, हाँ yes. छोटा सा अगर मेरे को कुछ अलग चीज करना है, लेटेस्ट जाना है, एजुकेशन 4.0 पे करना है, करंट मॉडर्न टीचिंग को अगर संभालना है, मेरे को एनईपी को अगर ओके करना है, एनईपी अभी कौन सा आ गया, वो आ गया एक नया. आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स, फाइन, बट देयर आर 100 गुड डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशन व्हिच आर लाइक गाइडिंग लाइट्स फॉर अस, व्हिच आर लाइक. इसके लिए क्या करना चाहिए, तो मैंने क्या सोचा था, व्हाट आई वांट टू पुट अक्रॉस इन दिस सेशन टुडे, that will be my point, is ये सब मैं कर सकता हूँ क्या. आप 2 चीज you can guide into your colleges. पहला जो मैंने बताया, फेवरेट सब्जेक्ट, स्किलिंग, गोल, उसको सेग्रीगेट करवा लिए और उसको ऑन कर दीजिए. पीयर लर्निंग जैसा लर्निंग नहीं है, मैं बता रहा हूँ. पीयर लर्निंग जितना होता ना उतना टीचर से पीयर लर्निंग नहीं होता. वो लर्निंग अलग है. वो जो बच्चे कैजुअली बैठ रहे, कैंटीन में बैठ रहे और 6 घंटे लगातार बैठे हुए,
वो पढ़ाई जो होती है वो अलग होती है। और बच्चे बहुत स्मार्ट, डिजिटल कंटेंट ने चमत्कार कर दिया। डिजास्टर ड्रिवन डिजिटलाइजेशन बोलता हूं मैं, क्योंकि इंडिया से था जहां डिजिटलाइजेशन नहीं हो रहा था ठीक से, तो इसी बहाने हो गया। जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, आज से 15 साल पहले था ना, 10 साल पहले क्या माइक्रोसॉफ्ट टीम सब यूज करते थे, दुनिया यूज करती थी। वी नेवर यूज्ड टू यूज दैट। हमको जब तक घर में नहीं लॉक कर दिया, कॉलेज को ताला नहीं मारा, तब तक हमने माइक्रोसॉफ्ट टीम सीखे नहीं, वेबएक्स सीखे नहीं। तो फाइन, गुड, थैंक गॉड, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज दैट यस, जो भी नुकसान हुआ। सर आगे आई शुड सर आने के ना मैसेज करेंगे सर। हाँ यस यस फाइन। सो द पॉइंट इज, 4 चीजें हम लोग कर सकते हैं। अब बहुत कुछ कर सकते हैं, देखो 100 चीजें कर सकते हैं। जब तक हम लोग फिजिकल क्लासेस चालू की, खुश हो गए लोग। आई सेड नो, आई मीन दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। मिक्स मोड इज द बेस्ट थिंग टू गो। फिजिकल बैठे तो ठीक, नहीं बैठे तो परफेक्टली ऑलराइट। जिसको पढ़ना है, जिसको सुनना है, उसकी गरज है। इफ ही इज सिंसियर इनफ, एनी काइंड ऑफ मोड इज ओके फॉर दैट। एंड जिसको सीखना ही नहीं, फिर उसको तो सर पकड़ के यहाँ बिठा देने कोई फायदा नहीं। सो व्हाई टू वरी अबाउट एन इफेक्टिविटी ऑफ दिस मोड एंड ऑल दैट? सॉरी, इट इज फॉर द पर्सन हु इज लर्निंग. If he is not sincere enough, just let us not, it's not my concern. So it is not about effectivity, it is about ease. It is about comfort. It is about what you can do. It is about what you can bring out the change. Please accept digital content and be part and parcel of that entire ecosystem. पूरा कॉलेज शिफ्ट हो गया है डिजिटल पे। आप एक टॉपिक नहीं पढ़ा है, उसको तुरंत यूट्यूब करता है, उसको आईआईटी के प्रोफेसर का लेक्चर मिलता है और आपको जो बोलना है बोलता है। क्या पढ़ा है आपने करके, कहां से कौन से टीचर दे दिया बोले, ये ऑब्वियस है। पर अगर आपने भी वही सर्फिंग किया रहेगा, अगर आपने अपने सब्जेक्ट के सारे यूट्यूब, सारा एनपीटीएल, सारा कोर्सेरा, एडेक्स और ये देखा हुआ होगा, तो यू विल बी आल्सो अ बेटर पर्सन। पर अगर आपने आपका डोमेन नॉलेज अगर आपका किताबी है, इफ यू आर टीचिंग आउट ऑफ बुक्स, सॉरी, स्टूडेंट विल नॉट एक्सेप्ट। एंड इफ यू हैव डन अ सफिशिएंट high quality digital content survey of your topic, all the animations, all the videos, all the kind of concepts, all the professors from world, if you have not done this survey, you are going to be a failure at it. Because students are not going to refer your content from books. Library तो जाड़े लगले library ले, तो यार वो चेक कहाँ कर रहे हो कि हाथ में मोबाइल है, वो फट से देख क्या पढ़ा, एक बार सुना तो पाठ हो गया। और हम 4 लेक्चर लेके हमारा पाठ नहीं होता, तो पॉइंट इज अरे ये से हां ये से बैठे बड़ा मोमेंट में आई फिनिश इट। वेलकम सर, वेलकम माय मेंटर गुरु, एंड इट्स अ प्लेजर टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ हिम। सो द पॉइंट इज 4 थिंग्स इफ यू कैन स्टार्ट विद। ये these 4 things what I feel like if I accept myself on digital content, first thing, if I can, and then where from I should learn. अगर मैं digital content में नहीं हूँ, तो where from I am going to get a good teacher, best content, best कहाँ है? कॉलेज में? या physically आप travel करके VNIT जा रहे हो? VNIT किसने गारंटी दिया है? So you never know where you will get a good content. It is only, or it's an international thing. So be international. It's a very easy thing now. Internationalization of education, internationalization of your knowledge, and getting international exposure is something which is most easy these days because it's online. Because you don't have to spend some 5 lakhs rupees on your travel to UK or London or America. No, sorry. And people are super generous to deliver, to share, to talk, to share if they are online. You ask an appointment to any professor from Edinburgh University, talk to a Glasgow University, talk to a New York University, और देगा वो टाइम, वो आपको 3 दिन में 8 दिन बाद का टाइम देगा, चलो ये 2 घंटे में डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज ही हैज अ टाइम, ही विल बी डूइंग हिज वर्क एंड ही विल कंसिडर. एंड आई हैव ट्राइड दिस थिंग विद 35 यूनिवर्सिटीज आई एम वर्किंग विद करंटली, 35 फॉरेन यूनिवर्सिटीज आई एम एनी टाइम वर्किंग विद देम with no photographs in the hand, and I hate those photographs of MOU. जमाना गया, लोग अभी भी कर रहे हैं. There was a girl coming from there, सर हमें ऑस्ट्रेलिया के 5 वो आ रहे, कोई तो भी डैनियल मैनियल, मतलब क्या करना है मेरे को, आई डोंट वांट दैट. एजेंट नहीं सर, आप अलग अलग MOU लिख लेना और वो फोटो मेरे दिख रहा है केवी ने फोटो. My KV doesn't have any photo, but I am working with 35 foreign universities officially by traveling, meeting them, my teachers going there, those teachers coming to my university. It's happening. That is what I understand. My memorandum of understanding. फोटो निकालना मेरे को है नहीं. She was surprised. मेरे क्या कर, बिल्कुल नहीं हो.
tell me the domain knowledge. He is expert of which subject? Can he deliver a quality content, something which मेरे बच्चों को मिलने वाला है? तो आना नहीं तो मत। Otherwise तो गली गली में ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी बिक रही, सिंगापुर यूनिवर्सिटी बिक रही, अमेरिकन भी बिक रही, कोई फायदा ही नहीं। So that is not an internationalization. Internationalization is about sharing some domain knowledge with some good professor. May it be of 1 month, 2 months, 3 months, chalega, no issues. But that would be a great thing for. And I tell you, there are agencies who are paying rampant into all these areas. So go international, create your own digital, create. Abhi to log, you are not ready to serve digital content. Online padh ke aaye. They have gone to Unacademy, they have gone to Byju's, and they have gone to all such content which are high quality content. उसके बाद आपसे फिर वो पढ़ रहे, तो सुपर चैलेंजिंग हो गया। पहले तो भी ठीक था, नागपुर है IIT होम, नागपुर का LN और नागपुर का ये 1 लाख 2 लाख 50 लाख पगार वाले, अब उन्होंने 1 करोड़ पगार वाले से पढ़ा हुआ है। मैकेनिकल्स प्रवीण कुलकर्णी सर का सैलरी 3 घंटा सुबह 8 से 11 पढ़ाते हैं हैदराबाद में बैठ के, एंड हिज सैलरी 7 CR। अब कोई 7 CR सैलरी ड्रॉ कर रहा है 3 घंटे दिन के पढ़ाने के, तो उसकी क्वालिटी का तो सोचो। द मोमेंट ही अपलोड्स वीडियो ही गेट 3 लाख व्यूज एंड दैट टू अ सब्जेक्ट लाइक मैकेनिकल। वो चमत्कार है। अभी अब उस बंदे से तुम्हारा इमीडिएट कंपेयर फ्री है यूट्यूब पे, कोई उसको कोर्सेरा ज्वाइन नहीं करना है 20,000 रुपए फी भर के। द मोमेंट यू टीच समथिंग, सम कांसेप्ट, ही इज गोइंग टू चेक विद प्रवीण कुलकर्णी, ही इज गोइंग टू चेक विद फिजिक्स वाला। जमाना बदल गया है। यू नीड टू चेंज इमीडिएटली, एज अर्ली एज पॉसिबल। यू हैव टू गो, नॉट ओनली सर्च, नॉट ओनली गो इंटरनेशनल, नॉट ओनली गो ऑन डिजिटल कंटेंट, बट क्रिएट एंड प्रोड्यूस योर ओन डिजिटल कंटेंट, पोस्ट इट ऑन स्वयं, NPTEL। उनको they are striving hard for getting good content on their portals. There is a list wherein they will Swayam will ask, please create, and UGC is funding for creating such videos. Please see to it. Next is networking and use of technology in day to day. These 4 things, if we can start doing immediately, I think you can take education to a very different. Whatever instructions government will give, whatever instruction आएगा, बहुत डायल्यूट होके आने वाला है। हर चीज में डायल्यूशन होने वाला है। इफ यू आर, मैं तो भक्त हूं NP डॉक्यूमेंट का, पर मेरे को मालूम है उसमें से फाइनली क्लासरूम में क्या आने वाला है। आई नो दैट एंड यू कांट हेल्प इट, क्योंकि सरकार है, गवर्नमेंट है। 4th तक वो करना था, व्हाट 5th स्टैंडर्ड तक रीजनल लैंग्वेज लॉटरी, बापरे क्या चमत्कार। देयर आर 1 लाख महाराष्ट्रियंस, 5 लाख पंजाबीज आर स्टेइंग इन बैंगलोर। Will they allow their kids in Kannada 4th स्टैंडर्ड तक? नहीं। तो ऑब्वियसली स्टेट बोर्ड, गवर्नमेंट, CBSE सबको फ्लेक्सिबिलिटी देना पड़ेगा कि पेरेंट का ओपिनियन देखना। अब जब पेरेंट का ओपिनियन देंगे तो पेरेंट 5000% लिख के देने वाला है कि इंग्लिश, बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल, बिकॉज इट्स एन ग्लोबल विलेज। एवरी ह्यूमन रिसोर्स पासिंग आउट फॉर एनी कॉलेज इज गोइंग टू बी अ ग्लोबल एम्प्लॉय। सो यू कैन नॉट थिंक ऑफ, कितनी बड़ी बात है ना, सबसे बड़ा मार्केटिंग हुआ कि 4th स्टैंडर्ड तक रीजनल लैंग्वेज में पढ़ लो। कितना आसान, कितना टफ, हिंदी, मराठी। अरे रीजनल लैंग्वेज है कौन सी? मदर टंग भी बोला है NEP में, एक जगह मदर टंग है। मदर टंग इंडिया में तो हर 2 किलोमीटर पे भाषा बदल जाती है, तो किस भाषा में पढ़ाऊंगी? सो रीजनल लैंग्वेज, बैंगलोर एंटायर कर्नाटका कन्नड़, एंटायर महाराष्ट्र मराठी, एंटायर गुजरात गुजराती। ये करने के बाद भी you cannot implement this. So this is one example wherein immediately government will give dilution, will give flexibility rather. Dilution मेरा word है, क्योंकि बहुत सारा होने के कारण खराब होगा। But see to it that if me as a teacher, if I want to enhance, every teacher should think of his own growth, and that's fine. If you are, please don't restrict. Next, please don't restrict yourself to that crowd, that typical 60 वाला जो next. Previous. Just, I'm not boasting. I can be senior to many of you who are sitting. If I'm saying something, so I've done. I'm working with these many universities right now, and I have regular meetings with them, physical, online, offline, sharing of projects. I have developed syllabi. I am on board of studies of at least 16 to 17 European universities right now, developing syllabi for them into their kind of thing. See to it that if you decide, it can happen. And world is very small, it's a global village now. Please understand. It is about your first step.
No one has stopped you to call your own friend, call your own ex-student into your classroom. No one has stopped. This covers both internationalization as well as networking and collaboration. But it will not happen because that doesn't happen. So see to it that even in Indian partners, we are working with Tata Institute of Social Science. I am working with all those Kalinga. Amazing. आंखें खोलने के लिए टीचर्स को एक्सपोजर ही नहीं है. We are into that 40 घंटे theory, 10 घंटे practice. Hundreds of industries. I have visited so many industries and they welcome you like anything. I tell you. अभी भी लोग इंडस्ट्री विजिट मतलब फोटो निकाल. I have seen there are options. बोले ऐसा करो ना, फोटो निकालना है ना. Persistent guy called me, सर ये बाहर फोटो पढ़ूंगा सर. बोले आज टाइम नहीं. तुमको क्या फोटो लगाना है ना इंडियन एक्ट में. ये सब persistent पी ऐसे खड़े हो गए. 2-3 उनके भी खड़े हो जाते गरीब. वो चाय पीने आते थे बाहर, उनको टाइम नहीं रहता. That is what is collaboration. That is what is MOU. That is what is industrial visit. So you do that, fine. Please don't do that. Please find some topic which you can work together. I had been to numerous industries, pan-Indian, pan-world, and I tell you, I can vouch for that. जहाँ भी गया हूँ, कोई ना कोई काम मिला है. And I am not a core technical guy कि जो मेरे को एकदम मेरा कोई specific AI में काम है और मेरी एकदम मेरी expertise की बात ही नहीं हो रही है. बात ये हो रही कि बात करने से प्रोजेक्ट मिलता है. ऐसे ही एक फंक्शन में I was there for what? NIMH में एक रिसर्च मेथोडोलॉजी वर्कशॉप में I was chief guest into इसमें. We just had a discussion. They said there was WCLGM, there was one minister, there was one director of JNRDC, director of NIMH. ऐसे बैठे चाय पीते पीते 1.5 घंटा चले गया post this thing function. And then we were discussing. Since Lokendra Singh, very close friend of mine, he was also present, and we just discussed कि कितना lung cancer होता है और ये डिसीज में WCL के माइस की बात हो रही थी. And they said कि वो ऐसा अंदर जाते and they inhale nanocyte particles and they get a black lung disease which is very pathetic, which is equally dangerous than. लोकेंद्र सिंह ने लीड किया कि अरे आप कुछ करो. हाँ सर मेरे पास फार्मेसी है, बायोटेक है, केमिकल है, आपके पास पैथोलॉजी है. बोले विवेक मेरा पूरी लैब तुम्हारे पास है, लिखो प्रोजेक्ट करते तैयारी. वो किया. WCL said money is not a thing. चाय पीते पीते डिस्कशन हो गया, ट्रेंड हो गए. चौथे दिन मेरे को फोन आ गया WCL GM कॉल की, वो आपने बोला था एक मीटिंग रखी, आज आ जाओ. यू विल नॉट बिलीव, वी क्रिएटेड अ प्रोजेक्ट और अपनी छोटी सी मेंटालिटी AICD UGC के प्रोजेक्ट बना दिया. तो हमने कुछ 10-25 लाख का प्रोजेक्ट बनाया और फिर उनके पास गए कि बोला ऐसा है, ये सिम्स में ये सिम्स को पार्टनर बना लिया. EIT मेरा खुद का कॉलेज है, हमने 5 पार्टनर बन गए, 4 पार्टनर. एंड देन वी डिसाइडेड. तो क्या हुआ? दे सेड सर मैं WCL said already, I have already talked to my headquarter to CMPDI, but they are not ready to fund anything beyond 10 CR. So सर 10 करोड़ के नीचे का ही डालना पड़ेगा. हमने बंद करा फाइल, बोला यार ये क्या लाया हमने. हमने 25-40 लाख का लाए थे. उसे मैं गदगद कि PIT को 12 लाख की इक्विपमेंट मिल रही है. इसमें जो वेस्ट पेंट नीचे गिर रहा है, इसका क्या करना है बताओ. ये इसको पोल्यूशन कंट्रोल वाले बहुत तकलीफ दे रहे. 1 मिनट में प्रॉब्लम था. आई वेंट टू माय केमिकल इंजीनियर, बोले वो वेस्ट पेंट का फोम बनता है. प्रोजेक्ट दिया, सबमिट किया, काम चल. I mean, it is please see to it that if industry visit is of UG student, PG student, कुछ भी रहे ना, काम करने का जिद है तो इतने इंडस्ट्री जितने जहां भी गया हूं, I have found work there. And you have all friends. They may need chemical, they may need pharmacy, they may need pathologists, they may need physicists, chemists. कुछ भी लगेगा तो अपने पास है ना. We are engineering college, we are versatile people. हमारे पास तो सब कुछ है, बस हमको देना है. So there are numerous examples you can see. TCS we are doing with project, Mahindra, hyperthermia, GMC के साथ काम कर रहे. Whatever way you see, you can work there. Next. Please dissolve boundaries. Out of 33 foreign universities where I am tied up, I have never tied up with any physics laboratory. The moment you dissolve the boundaries, I am working with economics department of Warsaw. बढ़िया काम चल रहा है. प्रोजेक्ट सबमिट हो गया और वही फिजिक्स से फिजिक्स में कभी नहीं गया. I don't need it. क्योंकि वहां तो ईगो आ जाएगा. मैं भी 30 साल फिजिक्स प्रोफेसर, वो PhD, मेरे 12 PhD, तेरे 15 PhD. सॉरी, कम आउट होता है. If you collaborate with a mechanical guy, I am zero in mechanical. So I surrender. ठीक है भैया, तेरे को फिजिक्स की जितनी जरूरत है मैं दे रहा हूँ और तेरे तो मैकेनिकल का. You already doctorate, so you are a great. Instant collaboration. Please dissolve the boundaries. Focus to your own collaborations and you will find magical things happen. इतने फटाफट collaboration हो जाते. Just dissolve the boundaries. And the moment you are physics to physics, chemistry to mechanical to नहीं होगा.
क्योंकि आपके दोनों के नॉलेज क्लैश होते, ओवरलैप होते, और यहाँ क्या है, कंप्लीट सेक्टर आउट है। नेक्स्ट, प्लीज यूज इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज यूज सोशल मीडिया। अभी क्या होगा, टीचर सब जमाना बदल गया है, प्लीज कम आउट ऑफ दिस। देयर इज अ VNIT प्रोफेसर ऑफ माय क्लोज फ्रेंड, ही विल गिव ऑल असाइनमेंट्स केमिकल इंजीनियरिंग के ऑन फेसबुक। यहाँ हम फेसबुक रोक रहे हैं, इंस्टाग्राम बेकार है, फेसबुक बेकार है, उस पे मत जमाना आ गया है। And we need to grow as a teacher because the people we are addressing to is far ahead of us. So please see to it that use all these social media whatever you can. Next, last. We will finish up this. Last. I leave all that. नहीं बस last but one. तो दो ही बची. Next. Yes, it's an era of metaverse, neural link. ये सब बातें कर रहे हैं. इनको जो human resource मिलने वाला है वो हमारे से मिलने वाला है. अगर हम चैट जीपीटी को खराब बोल दें, अगर हम गिटहब हमको मालूम नहीं बोल देंगे, तो प्लीज कम आउट ऑफ दैट। लास्ट थिंग आई टेल यू, आई हैव एन हैबिट ऑफ टॉकिंग टू टीचर्स। आई वाज जस्ट शेयरिंग टू कावड़े सर और हजारे सर परसों। आई हैव एन हॉबी, अब क्या, आई वाज प्रिंसिपल फॉर 9 years और वो अभी इतना मस्त मजा आ रहा है, डायरेक्टर बन गया। तो आई हैव लाइक chosen बच्चे टू डिस्कस, टॉक, टीच, व्हाटएवर आई वांट, आई डू दैट and it is such a fun। रोज मेरे पास 20-25 बच्चे कॉलेज के, आउट ऑफ 6,000 स्टूडेंट्स, 10,000 स्टूडेंट, तो वो आते मेरे पास और इतना मजा आता है। परसों जो बैठे थे सर, एक बहुत अच्छा एग्जांपल, ऑल अपने को लर्निंग हो गया मेरे लिए इंसल्ट था, बट आई रिस्पेक्टेड हिम। व्हाट ही सेड, ही वाज एक्सप्लेनिंग, सर ये करते, सर वो करते। आई मीन वेरी डायनामिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, और मैं हर बच्चे, जब भी मेरे पास 15-20 ऐसे बच्चे आते, केबिन में पढ़ाता हूँ, केबिन में 15 चेयर रखिए, और बहुत मजा आता है। और उसके बाद में हमेशा आई मेक इट अ पॉइंट कि सम टीचर शुड असिस्ट देम, so that he should understand like what level of students, given a chance, what miracle they can do. So they were discussing, they were telling, sir ये कर लेते, सर ये ग्रुप फॉर्म कर लेते, हमारा ये, मेरा स्टार्टअप 3 साल से है, ये जो मेरा जो दूसरा बच्चा जो सेकंड ईयर का एरोनॉटिकल का है, उसका आईटी में 3 साल से स्टार्टअप है, पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर में शुरू कर दिया है। हम लोग ये कंपनी, हम ये कोलैबोरेट कर रहे हैं, पुणे में मीटिंग थी क्लाइंट के साथ, ये सब कौन बात कर रहा है, सेकंड थर्ड ईयर में। जमाना इतना बदल गया, अब उनको अपने फाइनल में पकड़ा के CRT कोर्स कर और 30,000 की इन्फोसिस की नौकरी कर, और उसपे भी वो फेल होता, बिकॉज ही इज इनटू डिफरेंट डोमेन ऑफ वर्क। ही सेड, सर आपने सुन लिया, बहुत थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा लग रहा। एंड आई वाज लाइक, ग्रेट, गोइंग इट, कम ऑन, फाइन। एंड आई हैव एन हैबिट, आई कीप माय लैपटॉप ओपन एंड गूगल इट व्हाट दे से, बिकॉज इवन आई डोंट नो द टर्म्स दे आर यूजिंग, बट आई नेवर शो लाइक दैट। एंड आई सेड, कम ऑन, दिस इज ग्रेट, डू इट, क्रिएट अ क्लब, फॉर्म अ क्लब, इफ यू नीड सम लाख 2 लाख रुपए में देने को तैयार हूं, प्लीज क्रिएट दिस। इज द मोटिवेशन गिवन। ही सेड, सर आप ही बोल रहे सर, बाकी कोई नहीं बोलता कॉलेज, तो सर एक काम करूं क्या? एंड दैट वाज अ डायलॉग ऑफ द डिकेड। ही सेड, मेरे को क्या लग रहा, बोले जो गैप आ रही ना, तो मैंने गैप टीचर और इसके जो टेक्नोलॉजी, क्या हम कुछ ही बोलते, टीचर को समझते ही नहीं, तो मैंने टीचर्स को ट्रेनिंग मॉड्यूल बनाया, उतना दे दूं क्या सब टीचर्स? सो स्टूडेंट ऑफर्ड मी टू ट्रेन टीचर्स टू reduce the gap between teacher and student to make teaching learning process a successful thing। अब ये नौबत आ गई है, and I said done। थोड़ा तुमसे सीखने में इशू हो सकता है, तुम मॉड्यूल क्रिएट करो, पहले 1 घंटा मैं लूंगा, तो सब सुन लेंगे, और फिर मैं तुमको धीरे धीरे एंट्री कराऊंगा कि ये बंदा बहुत स्मार्ट है, इसमें 20 मिनट में ये एनलाइटन करेगा। फिर तुमको एक को लूंगा, फिर वो एक लड़की थी बहुत जबरदस्त स्मार्ट, उसका खुद का यूट्यूब चैनल 3 महीने में मोनेटाइज हो गया है, और लाखों बच्चे उससे C++ पाइथन सीख रहे, सेकंड ईयर के बच्चे। ही इज अर्निंग आउट ऑफ यूट्यूब, ही इज अर्निंग आउट ऑफ इंस्टाग्राम, बहुत स्मार्ट है, बहुत फास्ट हो गए, डोमेन नॉलेज वाइज ग्रुप क्रिएट करके कम्युनिटी डेवलप कर ली। अब ये लेवल के बच्चे को अगर अपन ने 40 घंटे की थ्योरी देके पकड़ा दिया ना, और वन साइडेड एजुकेशन फर्स्ट जनरेशन का लेक्चर 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 मेमोराइज, सॉरी नथिंग विल हैपन। स्किलिंग बहुत दूर की बात है, मॉडर्न एजुकेशन बहुत दूर की बात है, 4th लेवल कुछ नहीं हो सकता। पीपल हैव शिफ्टेड, स्टूडेंट हैव शिफ्टेड, एंड प्लीज कंसीडर एवरीथिंग एज अ बून दैट वी आर हैप्पी इनटू दैट। अपने को नहीं करना है, अपने को सिर्फ फैसिलिटेट करना है, सुपरवाइज करना है, एंड सी टू इट दैट व्हाट मिराकुलस रिजल्ट्स यू कैरी। लास्ट नेक्स्ट, thank you so much all of you, thank you Hajare sir, thank you so much all of you for being, and thank you all those who are attending online। This is the magic of hybrid। I say न्यू नॉर्मल आता, न्यू नॉर्मल टीचर बड़े पूछते हैं फिजिकल क्लास होगी, मजा वो ब्लैक बोर्ड का मजा अलग है, सॉरी। मैक्सिमम मिक्स मोड को वेलकम करो, जहां जमता वहां लो, जहां नहीं जमता वहां ऑनलाइन लीजिए। ऑडियंस को अगर सिंसियरनेस है तो उसकी बात,
वो नहीं यार उसको मोबाइल बाजू में रख के सोना है तो फिर वैसे भी यहीं भी सोएंगे, तो क्या फर्क पड़ रहा है मेरे को। बट प्लीज वेलकम ऑल दीज मोड्स, प्लीज बी इनटू, इट्स अ नेवर नॉर्मल वर्ल्ड, it's not new world, new normal, it's a never normal thing, and it's so wonderful to see to it that yes, without traveling, without saving lakhs and crores of rupees of travel, you can deliver to hundreds of people. I know, I mean, I could see so many of them are attending, I could see that screen there, it's so wonderful. सुबह एक लेक्चर ले लो, शाम को दूसरा मीटिंग ले लो, साइड बाय साइड काम भी हो रहा है, फिर तीसरा काम हो रहा है. This generation to which we are addressing can do multiple, they are multitasker, they can do 5 activities. और उनको एड्रेस करने के लिए हमको 2-3 तो सीखना पड़ेगा. So please see to it that we update ourselves, we go international, we find our space on digital space. Please record, please don't restrict your education to those 60 students, जिसमें के 60 में से अटेंडेंस ही 75% है, 45 में से 10 को नींद आ रही, 5 ने ये लगा लिया है, और 4-5 बच्चे सुन रहे, उनके लिए आपका इतने सालों की मेहनत खराब हो रही है. प्लीज रिकॉर्ड योर वीडियोस, record it again and again. Please don't have come out of that complex that people will listen to me, so what, but create your own digital content. See to it that yes, you can do that, and if you can do that, पॉलिटेक्निक में मेरा नासिक में एक दोस्त है, I have all young generation friends, बहुत अच्छा है, सीखने के लिए यंग वाली जरूरत है. तो के वार्ड में आता नवीन लागलेला है, मेरा नाम भूल रहा हूँ मैं, मैकेनिकल में लेक्चरर, उसको सब बोलते थे यार ईडी क्या पढ़ा था, ईडी क्या मतलब अभी जो ग्राफिक्स, ही इज अमेजिंग इनटू ग्राफिक्स. तो उसने बोला ठीक है ये क्या कर रहा तू, तो बोले यूट्यूब कर दे. तो यूट्यूब डाला, चला नहीं, 5-10 वीडियो डाले, 2-3 हजार लोगों ने देखे. इसे यार मैकेनिकल ग्राफिक्स इज लाइक एक 10 लाख का ऑडियंस है इंडिया जिसको ग्राफिक्स पढ़ना है, तो मेरे को क्यों नहीं मिल रहे. समबडी सजेस्टेड यूडेमी. सर यूडेमी पे उसने सिर्फ 5 घंटे का ग्राफिक्स का कोर्स अपलोड किया. चमत्कार देखो, 23,000 बच्चे 2 महीने के अंदर रजिस्टर हो गए. एंड यूडेमी पे यू 40% रेम्यूनरेशन ऑफ वॉट एवर फीस इज बीइंग चार्ज टू देम. यूडेमी फ्री नहीं है, समझो 1000 रुपए का भी कोर्स है यूडेमी पे, तो 1000 में से उसको 400 रुपए मिल गए, और 400 रुपए इंटू 25,000 बच्चों ने 3 महीने के अंदर उसका कोर्स रजिस्टर किया. ये चमत्कार डिजिटल मीडिया का है. तो सी टू इट इफ योर नॉलेज इज इनफ, if you feel that you are good at only one single topic, that can fetch you. Taken many sessions and trainings only on how to make video. पब्लिक को उसमें भी तकलीफ है. मेरे पीपीटी में विंडोज का 10 नहीं है ना, तो बोले पीपीटी में रिकॉर्ड नहीं होता. पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन खोलने के बाद रिकॉर्ड नहीं होता, उसमें फोटो नहीं आता. ये क्वेश्चन 30 साल का डॉक्टरेट आदमी पूछ रहा है, 30 साल एक्सपीरियंस वाला. प्लीज कम आउट ऑफ ऑल दिस थिंग, बी एक्सपर्ट. जैसा चॉक एंड बोर्ड हमको सीखना नहीं पड़ा, वैसा हमको video editing, video making, recording, learning, everything we should get, must get expertise into all these domains, otherwise we are nowhere. Thank you so much once again for patient listening. I am open for questions, or you can next last slide, you can email me or WhatsApp me anytime, and WhatsApp के सारे जवाब मैं देता ही हूँ. Maximum 24 hours में I will reply to any